1 2 3 4 5 है, ठीक है। 5 है इसमें? 5 गियर है। हाँ। 1 2 3 4 5। ऑयल नहीं डूबा है ना, फंस रहा है पूरा सा। ऑयल लगा दो, थोड़ा डाल के छोड़ दो। तो दिनेश भाई ओरिजिनल पैकिंग है क्यों भैया? हम लोग सब ओरिजिनल डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग जेन्युइन आदमी हैं। दिनेश भैया कभी नकली सामान लगा के नहीं देते। ये ग्रीस क्यों लगा के भैया, जरा बताओ तो। दोबारा खोलना है तो दोबारा खोलेंगे क्यों हम लोग? अरे भैया इसमें अच्छा, कभी खोल देना पड़ा तो फ्रेश से बैठेगा। अच्छा, बात बताऊंगा, खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से काम करेगा मतलब पैकिंग। कभी पैकिंग फट जाता तो भी कहा उसको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं बेकार हो, मुड़ गया तो भी यूज नहीं करना चाहिए। ऑयल लीक हो जाता है। ऑयल लीकेज होगा, उसके लिए पूरा खोलना पड़ जाएगा।
बताओ तो क्या साफ कर, क्या है बोलते भी है इसको? बाबाजी के तो अरे बताओ ना। गियर साफ। गियर साफ करें तो दोस्तों दिनेश भी गियर साफ कर रही, पेट्रोल से साफ करना पड़ता है दोस्तों। ऐसा ठोका ताल करते थे ये क्या होता है इससे? जाम है ना पूरा पकड़ा हुआ है। ये देखो ये इतना टाइट है, ये कहाँ प्रेशर से निकल जाएगा? नो आरी ब्लेड से तो निकलेगा, स्क्रैच आएगा। ये देखो ना, ये देख, ये मट्टी को काट रहा हूँ लोहे जैसा, तो निकल रहा है, कहाँ से होगा बता? रबर भी कटर साथ। इतना पिस्टन में गंदा सब जमा हुआ तो क्या पेट्रोल से नहीं होगा? पानी से थोड़ी हो जाएगा। एकदम प्रेशर वाला पानी। दिखाओगे भी एक बार दोस्तों, ये पिस्टन का लॉक रहता है, ये देखो मस्त है ना। इसको क्या बोलते भैया? बाबाजी का टुल्लू।
सो जा रहा हूँ।